નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 1 ચિત્ર કે સંગ સંગ એક ચિત્રપાઠ આપેલો છે। આ પાઠનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે કે ચિત્રપાઠમાં આપણને ચિત્ર આપેલા છે એ ચિત્રનો અભ્યાસ કરીને એના સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના જે પ્રશ્નો અને પ્રવૃત્તિ છે એ આપણે આજે શીખવાની છે। જો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી લેજો, જેથી કરીને બધા જ વિષયના સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશનના વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। ચાલો આપણે પાઠ નંબર 1 ચિત્ર કે સંગ સંગ આ ચિત્રપાઠનું અભ્યાસ કરીએ। ચાલો, આપણને પહેલાં જ પેજ ઉપર સરસ મજાનું ચિત્ર આપેલું છે અને એ ચિત્ર ઉપરથી આપણે તમને અહીં કીધેલું છે कि चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चित्रનું અવલોકન કરવાનું છે અને તમારે એના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। ચાલો આપણે ચિત્રનો અભ્યાસ કરી લઈએ, જોઈ લઈએ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ચિત્રમાં શું દેખાય છે। ચાલો એનો અભ્યાસ કરી લઈએ। આ સરસ મજાનું ચિત્ર આપણને આપેલું છે। ચિત્રમાં એક બાઇકવાળા ભાઈ છે, એક રિક્ષા જઈ રહી છે, રિક્ષામાં પેસેન્જર બેઠા છે, એની પાછળ બે કાર છે। સરસ મજાનું સિટી અને એ સિટીના રસ્તાનું ચિત્ર છે। જો આ બાજુ તમે જોવા જાઓ તો રસ્તાની એક બાજુ એક કૂતરો સૂતો છે, અહીં મોચી બેઠો છે, એક ફુગાવાળા ભાઈ છે, એક બેન શાકભાજી વેચવા જઈ રહ્યા છે, એક ભાઈ સાયકલમાં હવા ભરી રહ્યા છે। તો આવું સરસ મજાનું ચિત્ર તમારી સામે આપેલું છે। તો આ ચિત્રનો અભ્યાસ કરીને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। અહીં પ્રશ્નો આપણને 1 થી 6 પ્રશ્નો આપેલા છે। ચાલો આપણે આ પ્રશ્નોના જવાબનું સોલ્યુશન કરીએ। ચાલો, प्रश्न नंबर 1 છે कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, ये जवाब લખવાનું છે। तो ચાલો આપણે ચિત્રમાં જોયું એ રીતે कि पहले चित्र में निम्नलिखित क्रियाएं हो रही है कि एक साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है, ते पण आपणे जोयुं। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक फुगावाळो फुगा वेचवा जाए छे, फुगा हवा में उड़े छे, ये पण आपणे चित्रमां जोयुं। एक कुंजड़ी એટલે કે सब्जी बेचने वाली, तो एक सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है, दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है, रिक्शा में एक यात्री बैठा है, रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं, सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। तो આવું બધું ચિત્રમાં આપેલું છે, જો તમારી ભાષામાં લખવાનું છે। આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो जवाब आवशे विद्यार्थी मित्रों कि गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उसमें गैस भरी है। नंबर 3, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो जवाब है कि जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। क्यों? क्योंकि ट्यूब हवा भरने से टायर कड़ा बनता है, टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है, बिना हवा से साइकिल नहीं चलती है। प्रश्न नंबर 3 जोई। 4, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? तो जवाब आवशे चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। नंबर 5, कुंजड़ीन सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? खबर है कि अपनी सोसायटी में, महोल्ला में, अपनी शેરી में, अपना विस्तार में वेचवावाळा आवता होय छे। तो जवाब लखी शकाय कि कुंजड़ीन सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियाँ बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। नंबर 6, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? तो जवाब आवशे रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियाँ नहीं मिली होगी। तो आ रीतनो तमारे जवाब लखवाना छे। आ हतो प्रश्न नंबर 1 एनो प्रश्नोना जवाब। आगळनो आपणे प्रश्न जोईए। तो प्रश्न नंबर 2 में छे कि चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए अथवा दीजिए। અહીં આપણને બીજું એક ચિત્ર આપેલું છે, એ આપણે ચિત્ર જોઈ તો આપણે ચિત્રમાં રસ્તાનું ચિત્ર એ જ છે, પણ એમાં એક એવી ઘટના બની છે કે જેને કારણે ચિત્ર અસ્તવ્યસ્ત બની ગયું છે। આપણે જોઈએ કે ચિત્રમાં આ
ટાયર ફાટ્યું છે એવું લાગી રહ્યું છે, જેના કારણે અસ્તવ્યસ્ત ક્રિયાઓ થઈ ગઈ છે। तो चलो આપણે એ चित्रનો अभ्यास अवलोकन करिए कि टायर फटने पर क्या क्या हुआ, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए, रिक्शे वाले बाइक से क्यों टकराया, टायर फटने का प्रभाव किस स्किन पर नहीं पड़ा, मोची क्यों रास्ते पर आ गया। टूंकमां आ चित्रमां आपणे टायर फाटवानी जे क्रिया थई छे कि एना लीधे बीजा व्यक्ति पर सी असर थई छे ए बधुं आपणे चित्रमां आपेलुं छे। चलो आपणे ए प्रश्नना जवाबनुं सोल्यूशन मेळवीए। तो जवाब आवशे कि प्रश्न नंबर 2 पेलो छे कि टायर फटने पर क्या क्या हुआ। तो टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, डंडे पर बैठा तोता वो टायर फटने की आवाज़ से उड़ने लगा, बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगी, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया, लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। तो आवी घटनाएं छे टायर फाटने पर थई। प्रश्न नंबर 2 है कि टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम बताइए। तो टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ें हैं तो गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केट बॉल, तकिया, मून वॉकर आदि इसमें हवा भरी जाती है, वो सब फटने वाली चीज़ें हैं। नंबर 3, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया। तो बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। आवो आपणे जवाब लखी शकाय। नंबर 4, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। तो जवाब आवशे टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा, क्योंकि वो टायर फटने की जगह से कहीं दूर थे, इसलिए। मोची क्यों रास्ते पर आ गया। टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया, क्योंकि ज्यां टायर हवा भरी जाती हती त्यां ज ए मोची बैठो हतो। तमारे तो आज आवा जवाब लखवाना छे। आगळनुं जोईए कि शुं छे। तो हवे आवे छे प्रश्न नंबर 3, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की, आप भी ऐसे किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्ननो जवाब तमारे तमारी रीते मौखिक लखवानो छे। तमे क्यांय पण मार्केटमां, बजारमां के कोई अन्य जग्याए कोई आवी घटना बनी होय, टायर फटने जैसी कोई घटना, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, वो आप अपनी तरफ से लिख लीजिए। चलो आगळनो प्रश्न छे ए हवे आपणे स्वाध्यायना प्रश्न जोवाना छे। स्वाध्यायमां पहेलामां छे कि चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जे आगळ चित्र हता ए ज चित्रना प्रश्नोना जवाब आपेला छे, एनो आपणे जवाब लखवानो छे। चालो आपणे जोईए। रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। आपणे अहीं एवी वस्तुना नाम लखवाना छे कि जे रबरमांथी बनेली होय। तो जवाब आवशे कि रबर में से बनी हुई चीज़ों के नाम। तो गेंद એટલે કે बॉल, टायर, रबर, रबर बैंड, ट्यूब, गुब्बारे आदि ये सब चीज़ें हैं रबर में से बनी हुई है। प्रश्न नंबर 2 है कि टायर फटने से पहले क्या हो रहा था। तो आपणे चित्रमां जोयुं ए ज बधी वस्तु आपणे लखवानी छे कि टायर फटने से पहले बाजार में सब अपना अपना काम कर रहे थे। जैसे कि साइकिल वाला टायर में हवा भर रहा था, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, कुंजड़ी सब्जियां बेच रही थी, मोची अपना काम कर रहा था, कुत्ता लेट रहा था, तोता ऊपर बैठा था, रोड पर गाड़ियों चल रही थी, कलनी जग्याए चल आवशे। विद्यार्थी मित्रों सुधारी लीधो आदि। तो ऐसी क्रियाओं हो रही थी, आपणे बधुं लखी सकीए छीए। प्रश्न नंबर 3 है कि टायर क्यों फटा। तो टायर बहुत पुराना था इसलिए, या उसमें ज़्यादा हवा भर जाने से फट गया होगा, कोई एक कारण होगा। नंबर 4 कि टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, एनो जवाब आपणे लखवानो छे। टायर फाट्या पछीनी क्रिया शुं। तो टायर फटने से हवा भरने वाला आदमी गिर गया, कुजड़ी से सिर से सारी सब्जियां जमीन पर गिर पड़ी, तोता ज़्यादा आवाज़ से उड़ गया, गुब्बारे वाला का सारे गुब्बारे हवा में उड़ने लगा, मोची का सामान बिखर गया, लेटा हुआ कुत्ता जल्दी से भागने लगा। आ जवाब आपणे लखवानो छे। तो आ हता स्वाध्यायना प्रश्नोना जवाब। हवे आगळ जोईए। प्रश्न नंबर 2 आवे छे, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, अहीं सरस मजानो एक पेरेग्राफ आपेलो छे,
એ પેરેગ્રાફને તમારે વાંચવાનો છે, એનો અભ્યાસ કરવાનો છે અને પછી સુલેખન એટલે સરખી રીતે લખવાનો છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને ખબર છે કે સુલેખનમાં નાની નાની પણ ભૂલ ન થાય એ ધ્યાન રાખવાનું છે. પેરેગ્રાફ પાડવો, કોઈ પણ અવતરણ ચિહ્ન હોય, ઉદ્ગાર ચિહ્ન હોય, પ્રશ્ન ચિહ્ન હોય, પૂર્ણ વિરામ હોય, આ બધા જ વિરામ ચિહ્નોનો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. અને જોડણી ભૂલ ન થાય એ પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. સરસ રીતે સરખા શબ્દ વચ્ચે સરખી જગ્યા અને મરોડદાર અક્ષર સાથે ફરીથી તમારે સુલેખન કરવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જવાબ છે, તમારી નોટમાં તમે લખી લેજો. આગળ જોઈએ, ચિત્રો કો દેખકર દોનો મેં ક્યાં ક્યાં અંતર હે ઢૂંઢકર बताए. विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपने बे चित्र आप्या छे, तो बे चित्र में क्या क्या फरक है ये आपणे जोवानो छे. तो चालो आपणे जोईए. तो एक तो पेला चित्र में आपने देखाय छे कि आ वृक्ष में थड़ देखाय छे, आमां नथी. बीजी वस्तु, आ माछली छे, ए ज माछली अहीं आपेली छे, पण एना शरीर पर बे લીટા आपेला छे, आ माछली में नथी. आगळ जोईए तो અહીં આપણને બે માછલી આપેલી છે, એ બંને માછલી એક સાઈડ જાય છે, જ્યારે અહીં જોવાય તો આ માછલી વિરુદ્ધ દિશામાં જાય છે. તો પણ આ પણ એક તફાવત છે. બીજી બાજુ જો અહીંયા જોઈએ તો આ ફૂલ ખીલેલું નથી લાગતું, અહીં ફૂલ ખીલેલું દેખાય છે. આ બંને ફૂલ છે એ અલગ અલગ છે. અહીંયા બતકની ચાંચ આપણે જોઈએ તો ચાંચમાં પણ આપણને તફાવત દેખાઈ રહ્યો છે. સૂર્યમાં જોઈએ તો એના કિરણમાં પણ અહીં તફાવત જોવા મળે છે. અહીંયા વૃક્ષની વાત કરીએ તો વૃક્ષ ઉપર બેઠેલું જે પંખી છે ને આમાં પૂંછડી છે, આમાં પૂંછડી નથી. તો આ રીતે જોઈએ તો અહીં પણ આ ચિત્રમાં સાઇઝમાં નાનું મોટું દેખાઈ રહ્યું છે. તો આવા ઘણા બધા તફાવત છે એ આપણને અહીં જોવા મળે છે. તો એ બધા જ તફાવતો તમારે શોધીને તમારે એની ઉપર સરસ મજાના પેન્સિલથી રાઉન્ડ કરી દેવાના છે. તો આ હતો પ્રશ્ન નંબર 3નો જવાબ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતો ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 1 ચિત્ર કે સંગ સંગ ચિત્રપાઠના સંપૂર્ણ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન. તો આવા બીજા પાઠના પ્રશ્નોના સોલ્યુશન મેળવવા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો, જેથી કરીને નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. આભાર.